So this is f of t. Let us assume that f of t is equals to, what is the f of t value? Sine Sine 2t. 2t. And we apply Laplace transform on both sides. Yes. Laplace of f of t is equals to Laplace of sine 2t, that is equal to Laplace of sine 2t. Answer is 2 by s square plus 2 square is 4, which we can call it as f bar of s, which we can call it as f bar of s. Now by multiplication of t property, if you want to mention your choice, if you don't want to mention, also no problem. By Mhm. multiplication of t property, or you can say it is theorem, Laplace of, अच्छा यहाँ पे भी दो मेथड्स है, आप एक टी मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, फिर बाद में एक और टी मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, ऐसा भी कर सकते हो, और टुगेदर टी स्क्वायर को डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। टी स्क्वायर आई एम गोइंग टुगेदर ओनली, माइनस Okay. वन टी स्क्वायर है, तो देन माइनस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू एफ बार ऑफ एस. Mhm. So square means term will become positive. Now we have to differentiate this function two times. It means d by ds of f bar of s is what we got it, 2 by S s square plus square 4. plus 4. Yeah. And already we know that 2 is a constant. Mm. So we can take it out. Yes, we can pull overall outside together. सबके बाहर निकाल सकते हैं आप 2 को. Yeah. d by ds of, what's left of here, d by ds of 1 by 1 by S square plus 4. s square plus 4. You know what is the differentiation of 1 by x? Remember? Differentiation of 1 by x. Uh, d by dx of d by dx of 1 by 1 x. by x is equals to minus 1 by x square. Okay. This is equal to 2 times d by ds of, this is 1 by x form, we write it as minus 1 by x square. It X is means S square. s S power square 4. plus 4 whole square into, there is an inner function that is s square, which is becomes 2s. Okay, we Okay. assume this was 1 by x, इसका inner function भी रहता, x becomes 1, like that. So if it is not 1, then we have to differentiate this one separately. So finally, Okay. one more 2 will come out. Minus 2 2s are 4. d by ds of s by s square plus 4 whole square. Now we have s is our function that is there in the numerator and as well as it is there in the denominator. It means we have to apply u by v rule. Yeah. Formula I wrote already, there it is a formula. So I want to write the direct answer. Minus 4 is a constant. The rule is we have to write denominator whole square. It means that s square plus 4, already we have squared. According to the formula, it will become one more time squared. And v will come here. It means s square plus 4 will come here. Okay. So then Okay. d by ds of u. U means s is here minus s into d by ds of ds. s square plus 1 whole square.
then bracket will be closed, Okay. which is equal to minus 4 into s square plus 4. Okay, that is d by Yeah. ds of s is 1. I am not writing that. Minus s into its x square form. Derivative of x square is 2x now. Yes, sir. 2x means it is becomes 2 into s square plus 1 into, there is an inner function again, s square becomes 2s. Which is 2s. Yeah. Denominator, this denominator together becomes s square plus 4 by 2 to the 2 to the 4. 4. This Yeah. bracket will be closed overall. Okay, so let us Yes, see. sir. You can do one thing. We have done a small mistake here. That is not s square plus 4. It is not s square plus 1. It is s square plus 4 actually. Where, sir? Here it is s square plus 4 actually. It is also plus 4. So now you can see s square plus 4 is there here. S square plus 4 is there here. And here also v as it is. V means this one. S square plus 4 whole square as it is. Yeah. So it is also s square plus 4 whole square. So let me take common. Minus 4 into Yeah. s square plus 4. I want to take it common because it is repeated. So left is s square plus 4 here. Now already s square plus 4 outside. तो यहाँ पे कितना बच गया? Minus 2 to the 4s square left. Whole divided by s square plus 4 whole to the power of 4. ये LAQ है अपन जो कर रहे. Small short answers Yes, नहीं yes, होता. sir. This one with this term cancelling out. Finally, whatever left off, that is our answer. Okay. So 3, what is left off? This is minus 4 times uh, S this square is plus 4 first. Minus 4s square means minus 3s square by s square plus 4 whole to the power of 3. Right? yes, sir. एक टर्म कैंसिल हो जा रहा है Y. ना. बाइक लिख दिया हमें. आप जरा एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से देख लीजिए. हेलो. हाँ जब्बार साहब. क्या हुआ यार, फोन ही नहीं उठा रहे थे. ऐसा. अब मेरी भी ऑनलाइन क्लास चल रही. आप वो कल का कंफर्मेशन क्या से करा था भाई, क्या हुआ? कब तो तुम घर पे रहे तो अच्छा रहता. तुम घर पे रहे तो अच्छा रहता. मैं दूसरों के घर में जाके मैं अकेला पड़ा. बच्चे आते करते रहते भाई, रहे तो अच्छा रहता. नहीं तुम कब कब फ्री कहीं को, तुम कल छुट्टी नहीं है? हाँ, सेकंड सैटरडे है ना कल. कब तक आते फिर तुम? अरे फिर कैसा जी, फिर मैं बच्चों को नहीं, कैसा फिर दरवाजा खटका मारना, क्या करना क्या है? हाँ. तो अच्छा वो, फिर उसका क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, पानी का नहीं बोल रहा हूँ. तुम सामने रहे तो अच्छा रहता. वो क्या हम तो सोचते हैं. नहीं जी भाई, 2 घंटे 2.5 घंटे रहना रहता देखो. मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम छुट्टी रहे तो फिर अपन बाद में साथ में लंच भी कर लेंगे मतलब में. तुम बीच में ब्रेक रहता शायद ना तुम्हारा. बीच में ब्रेक कब रहता? तो फिर वो 1:30 बजे के बाद.
उसके बाद ऐसा। अच्छा, फिर और तुम्हारे घर का लोकेशन होना ना, फिर कैसा हो जाके लोकेशन डाल, बच्चों को भिजाना है, बच्चों को भिजाने का है लोकेशन। ठीक है, तुम घर को जाके फोन कर, घर पे है अभी? हाँ ठीक है, घर को जाके मैं फोन करे पर। हाँ ठीक है। तो हेलो। Yes, sir. हाँ, ये स्टेप्स यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द स्टेप्स वेरेवर। Yes, sir. दिस इज LQ वी आर डूइंग। हाँ, बड़ा क्वेश्चन Okay. है ये, टी स्क्वायर का है, T⁻³ में भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। इट मीन्स यू Mm-hmm. हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन 3 टाइम्स। Three times. Yeah. हाँ, तो नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन फॉर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो actually proof is not necessary. Some proofs they may ask in exam, some of the proofs they will not ask. तो खाली आप स्टेटमेंट भी लिख लिए तो इनफ है। तो आई एम राइटिंग द G स्टेटमेंट। statement. डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय, ये मैं आपको पूरा यूनिट पढ़ा दे रहा हूँ। जी सर, इम्पोर्टेंट है शायद ना। हाँ, इंपॉर्टेंट है। Right. ये सब बेसिक का मालूम रहे तो क्या होता है, इसका जो LQ आता है ना, एप्लीकेशन ऑफ लैपलास जी। ट्रांसफॉर्म, वो ये हम्म, सब चीजें समझ में आए तो वो बहुत आसानी से आप कर ले सकते ओके। हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं क्लास सर नहीं बोल, क्लास सर नहीं, बाद में खाता हूँ माना। L of f(t), L of f(t) is equals to f bar of s, then L of f(t) by t। मतलब t से अगर डिवाइड हो रहा कोई भी फंक्शन तो कैसे करना है आंसर में, वी हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन फ्रॉम s टू इंफिनिटी, f bar of s ds। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी करे तो फंक्शन को इंटीग्रेट करना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, सो देन यू विल गेट द आइडिया। और यहाँ से ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो LAQs है, शॉर्ट आंसर्स नहीं होते। जी ठीक ओके है सर। ना, LAQs है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखिए इसके ऊपर, क्वेश्चन आता देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवॉल्व इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। लैपलेस ऑफ, ये सेम क्वेश्चन बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूँ। वन इम्पोर्टेंट, ओके। माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी। ओके, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके। नाउ सी द solution. Easily you can understand that it's a division by t property. Why? Because division is there in the denominator. It means the rest of the function we have to assume as f of t like this. Let us assume that our f of t value is equals to 1 minus cos t. Cost T, yeah. Yes. Then we have to take their Laplace transform. It means Laplace of f of t is equal to Laplace of 1 minus cos t. Now, individually, once we apply Laplace transform, it's a Laplace of 1 minus Laplace of cos t. Cost T. And we know the answers. Laplace of 1 is 1 by s, which I gave you the proof in the morning, Yes. T power minus, 0. yes, s square plus 1. Please don't disturb. There is a class going on. Don't disturb. Otherwise, I'll shout. Come on, go out. Mm. S by s square plus 1. Now, when we apply, this is we assume as f bar of s here. That is
Once if you apply division by t property, if you want to mention, that is well and good, or otherwise you can directly also do it Okay. by division of t, by division of t property. 2 बिट्स आते देखिए एग्जाम में, अगर आपको एलक्यू नहीं पूछा, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम एक लॉन्ग आंसर रहता या नहीं तो एप्लीकेशन रहता, Okay. अगर वो 2 में से नहीं पूछा क्वेश्चन तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में से पक्का पूछता। और एक कौन सा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोले? एक कन्वोल्यूशन थ्योरम एक रहता, एक एप्लीकेशन ऑफ अच्छा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक रहता। वो 2 में से क्वेश्चन ओके। आने के एलक्यू ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर वो नहीं जी। पूछा तो इसके कोई तो भी 2 बिट पूछ लेता आपको, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में का 1 बिट, इनवर्स ओके। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में का 1 बिट, या नहीं तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में से 1 बिट, या नहीं तो फर्स्ट शिफ्टिंग में का 1 बिट, ऐसे कोई 2 बिट मिला के पूछता। ओके ना? जी। तो देखिए जब भी अपन डी से टी से डिवाइड करेंगे, इट मींस वी हैव टू इंटीग्रेट अवर फंक्शन from s to infinity f bar of s ds. That function, whatever we got it above, that one we have to integrate with respect to s from s to infinity. Yeah, f bar of s. So let us see what is that if you integrate, which is equal to from s to infinity, f bar of s value is 1 by s minus s by s square plus 1 into ds. Right? Yes, sir. Now to simplify this one, what I am doing here is, let me mention here that we are multiplying and dividing with 2. Multiply and divide with 2. Why? Because Okay. to apply this formula, f dash f of x, f dash of x, integral of f of x, f dash of x dx is equal to log of f of x plus intermediate formula. If you differentiate denominator, numerator should come. S square differentiation is 2s, but we don't have 2s here, so I did multiply and divide by 2. अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, this is equal to integral 1 by s. You know, integral 1 by x is log x. No, sir. Okay, let me Integral write 1. that. वो भी लिख देता हूँ आप, जी। integration 1 by x dx is equals to log x plus c. Right? So 1 by s, Okay. 1 by x is log x. What about 1 by s becomes? Definitely log s, no? Yeah. Okay. 1 Minus by x is log s, 1 by s log s. Yeah. 1 by 2 is a constant as it is. Again, it is perfectly in this format. S square differentiation is 2s. Again, differentiation of denominator is the numerator. We can write it as log of denominator. That denominator is s square plus 1. That should be between the limits because it is already integrated. That's over. We have to apply the limits from s to infinity. Understand? Yes, sir. Now, next step is we can take 1 by 2 outside. 1 by 2 commonly we'll pulled it out. If you take 1 by 2 outside, but in the first term we don't have 1 by 2. अगर इसमें से 1 by 2 कॉमन ले तो 2 आ जाता है इधर, है ना? 2 and 2 cancel. Yeah. Minus 1 by 2 already we have taken out. That is, actually ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? You may have a question. Why we should not apply the limits directly? अगर अपन लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करें तो पूरा आंसर इंफिनिटी होता, दैट वी डोंट वांट. वो Okay. कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना. It is n log x form. We can also write it as log x to the power of n. Yeah. Understood? Minus log of s square plus 1. Since our answer will be in terms of log, that's what we have a facilities. Log a minus log b. How to write? Log a minus log b can be written as log a by b. Understood? Okay. Yeah. This 1 by 2
1 by 2 into, this is log a by b, s square by s square plus 1, and s will be changes to s to infinity, right? Now Yeah. applying upper limit and applying lower limit. अच्छा देखिए, अपर लिमिट तो s चेंजेस टू इन्फिनिटी हो रहा, बट लोअर लिमिट में s विल बी s ओनली ना, लोअर Yes, लिमिट sir. में s ही रह रहा ना, तो इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखना, लिमिट लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, log of, we'll do one thing, numerator and denominator dividing with s square dividing with s square will give you 1, s square divided with s square will give you 1, and here you will get 1 by s square. Understand this Okay. step? Numerator and This denominator is dividing with what? s square. Okay. Okay. This nothing but upper limit, till here upper limit. Mm-hmm. Minus lower limit में, lower limit में क्या है? s will be changes to s only, मतलब प्रॉब्लम में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, लिमिट s टेंड्स टू s ओनली ना, Yeah. तो s टेंड टू s बोल, तो ये वर्क आपको करने की जरूरत भी नहीं है, तो मतलब नहीं आपका है, जो right. फंक्शन एज इट इज आएगा यहाँ पे लोअर लिमिट जी में, सर. ये आंसर आता है एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर Mm-hmm. प्लस 1, दिस इज आवर लोअर लिमिट. As I told you, this is our LAQs. So we know Yeah. whenever s tends to infinity, s tends to infinity, 1 by s tends to 0, 1 by s square Yeah, tends, because 1 by infinity is 0. yes, 1. रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपन, n tends to infinity, 1 by n tends to 0, ऑलरेडी अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े. हाँ, yes, sir. 1 by 2 into, when applying the limit, AL stands for applying the limit, जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे, this term will become 0. What is left of? Log 1 now. 1 by 1. 1. Log 1. Yeah. Log 1 is 0, already we know. Okay. Minus s by s square by s square plus 1. This is equals to 1 by 2 into, because of this minus sign, the order of logarithm will change. It will becomes s square plus 1 by s square. Log a by b can be written as minus log b by a. You want the reasons? Log 1 value is 0, and log a by b can be written as minus log b by a. तो अपना क्वेश्चन माइनस लॉग बी बाई ए फॉर्म में रिवर्स कर दिया, माइनस निकाल के, जी सर. ठीक है. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस, लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos t Cos t. बाई t, दैट्स इट. Yeah. दिस इज द आंसर. आप चाहे तो एक और स्टेप आप इसका लिख सकते हो, 1 बाई 2 निकाल के इसका पावर 1 बाई 2, मतलब रूट में भी लिख सकते हैं आप. Okay. दैट्स योर ऑप्शनल स्टेप, दैट इज नॉट कंपलसरी. आप चाहे तो लिखिए, चाहे तो मत लिखिए, Mm-hmm. नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें चाहे तो Okay, फिर sir. एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर 1 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. तो डिवीजन Okay. बाई टी प्रॉपर्टी पे और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मैं देता हूँ, या नहीं तो एक और क्वेश्चन करेंगे. 5 मिनट है, हो जाता है क्वेश्चन. जी सर. प्लीज, द क्लास इज गोइंग ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी. इवॉल्वेट, इवॉल्वेट लैप्लास ऑफ e power t sin t by t. इट E मीन्स power t sin t. डिवीजन बाई टी और फर्स्ट शिफ्टिंग का टुगेदर क्वेश्चन है, अच्छा. ठीक है ना. जी सर. सोल्यूशन, सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास ऑफ साइन टी पहले कर ली,
Okay. Laplace of sin t. That answer we know that s coefficient, t coefficient is 1 by s square plus 1. ठीक है ना? 1 जी को आप चाहे तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दैट इज अवर एफ बार ऑफ एस वैल्यू. तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप किसको भी पहले करो. मैं कर रहा हूँ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. कभी भी फर्स्ट शिफ्टिंग जो करते हैं अपन, वो लास्ट में करना, वहाँ पे एस चेंज होता. अब यहाँ पे एस चेंज कर लिए तो प्रॉब्लम लेंदी होता. यू विल गेट द आंसर बट प्रॉब्लम बिकम लेंदी. डिवीजन बाय टी मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. इट्स अ 1 ओके by s square plus 1 square, that is ds. Now maybe you forget this formula, so let me write this formula. या Integral 1 by x square plus a square dx is equals to 1 by a tan inverse of x by. ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रहा हूँ, इसको बेस बना के आप जी दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करिए. आपके पास पास पेपर्स या कुछ तो भी मैटर मटेरियल होगा ना, वो ट्राई करिए आप. जी सर जी तो 1 by 1 is 1 only because a value is 1. So tan inverse of s by x by 1 सर I अगर am. आपके पास भी कोई पेपर्स है तो हाँ मैं भेजिए भिजाता हूँ, जी सर मैं भिजाता हूँ आपको एस टू इन्फिनिटी. अभी फिलहाल हमारे पास M1 सेमेस्टर चल रहा ना, M2 का मैं पूरा बंडल बना के अंदर रख दिया अलमारी में, अभी निकालना अच्छा पड़ेगा. आज लास्ट सेमेस्टर, लास्ट वर्किंग डे था सेमेस्टर 1 का. तो ओके कल से हमारे पास अब सेमेस्टर 2 की तैयारी होती. अपर लिमिट इज tan जी सर इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज tan इनवर्स ऑफ s. S will be ओके changes to s only. We applied the limit. So हम्म tan inverse of infinity value is already pi by 2. कैलकुलेटर में तो नहीं आता, आप याद रख लीजिए इसको. माइनस जी दिस इज tan इनवर्स ऑफ s. दिस इज इक्वल्स टू pi by 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s होता cot इनवर्स ऑफ s. एस बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू pi by 2. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रूल है. आपको चाहिए तो मैं इसको और नेक्स्ट सेक्शन में और डिटेल में बताता हूँ वो कैसा कौन सा रूल है, क्योंकि जी अपने सर पास 2 मिनट्स ही टाइम है. तो डोंट डिस्टर्ब मी. The last step is that we have to apply first shifting. That means Laplace of, once if we apply e power minus t sin t by t, it is equals to, what is that? By first shifting theorem, cot inverse of s, and s will be changes to, what's the एस rule? माइनस एस प्लस वन Yes, s plus 1. That is answer is what? कॉट इनवर्स Cot ऑफ एस प्लस inverse वन of s plus 1 will be the answer of this question. And here the rule is, ये रूल है देखिए, cot inverse of x plus tan inverse of x is equals to pi by 2. From this, ओके पाई बाय टू cot माइनस inverse tan of इनवर्स x ऑफ value is एक्स pi by 2 minus, yes. Understand now? यस यस सर That's, यस सर and ये जो tan inverse of infinity है, यहाँ पे infinity कब होता? tan pi by 2 पे होता, टेबल में देखो तो. तो tan and inverse cancel, answer is pi by 2. ओके That's pi by 2. Okay, this is the यस end सर of this problem and end of this section. नेक्स्ट सेक्शन में अपन और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कर देंगे. इनवर्स जी लैपलास सर ट्रांसफॉर्म कर दिए तो आपको फिर कन्वोल्यूशन और एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा. यू विल फिनिश इंशाल्लाह इट. ओके ओके सर राइट, थैंक यू. थैंक यू